Now we will be bringing you this special report on his journey from a village in Gujarat to becoming a three-time Prime Minister of the world's largest democracy. Take a look at that special ground report that we have got for you. भारत माता की, भारत माता की। A triumphant victory lap as Narendra Modi became the second Prime Minister after Jawaharlal Nehru to win a third term. After scripting history the last two times, winning with absolute majority, this term Narendra Modi is firmly back in the saddle with allies that he can depend on. एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। The Modi cult made the battle for India the most watched in the country's political history. While this election marked some lows for the BJP in states like Uttar Pradesh and Maharashtra, BJP breached barriers in the south, opening its account in Kerala. दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया। और महाप्रभु जगन्नाथ और वहां जो क्रांति रूप परिणाम आया है, मैं इसे एक रिवॉल्यूशन देख रहा हूं। Born on September 17, 1950, it was in the narrow lanes of Vadnagar, a small town in Gujarat's Mehsana district, that Narendra Modi grew up. His father ran a canteen near the railway station. Cycling to the Bhagwat Acharya Narendra Acharya High School every morning, young Narendra always knew he would one day outgrow his birthplace. हम कोई प्रश्न पूछते तो सबसे पहला उनकी उंगली होती है ना, फिगर तैयार, लेकिन हम बाद में पूछते, जो अच्छा नहीं पहचान उनको पहले हम क्वेश्चन कर दे, और यदि जवाब नहीं देते बाद में उनको हम पूछते, फटे दिन क्या फौरन दे देते जवाब यही। At the age of 18, Modi left home for 2 years. His travels led him to the RSS headquarters in Nagpur, where he underwent training, emerging an RSS pracharak in 1970. संघ कार्य में वो जुटे और इतने आगे निकल गए कि आज हम देख सकते हैं, और जो आज वो जो कुछ है वो संघ की वजह से। The only Indian Prime Minister to have a long tenure as Chief Minister. Modi helmed the state of Gujarat from 2001 until he became Prime Minister in 2014. His relationships with heads of state have made the front pages. The first Indian Prime Minister to give a public address at Madison Square Gardens took the starch out of official visits and away from the formal New Delhi settings, taking India global. Swachh Bharat, Jan Dhan, Ujjwala Yojana, Ayushman Bharat, and now Atmanirbhar Bharat. Policies for inclusive and self-reliant development are part of Modi's economic legacy. He vows to make India the third largest global economy in this term, and the world is taking notice. हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे
और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN News 18।